For those who have entered just now, this is the question. You have to solve it and let me know the answer. This is not a difficult question, guys. Anybody got the answer? Should we move on to the solution part? Okay. Okay, so this is the question, right? Determine the value of limit. अब यदि हम directly x equal to 0 put करेंगे तो क्या आएगा? This will be 1 upon ln 0 plus 0 plus 1. So it will be ln 1. So it will be 1 upon 0. तो ये हो जाएगा infinity. और यहाँ पे आएगा 1 upon ln again 0 plus 1. So 1 upon ln 1 is 0. So 1 upon 0 is infinity. So the first thing is कि infinity minus infinity आ गया. So this is indeterminate form. तो अब इसको किसी तरीके से यदि 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कौन सा रूल लग जाएगा तब? L Hospital's rule. Okay. So let's try to convert this question in 0 by 0 form or infinity by infinity form. So first of all, what I'll do is I'll take the LCM. Okay. So we get limit x tending towards 0 ln x plus 1 minus ln x plus under root x square plus 1, and in denominator we get ln x plus root x square plus 1 into ln x plus 1. Okay. अब इसमें 0 रख के देखेंगे तो क्या आएगा? ln 0 plus 1. So it is ln 1 0 minus ln 0 plus under root 0 plus 1. So this is also 0. Then here also 0. So this is in the form 0 by 0. And now we can apply which rule? We can apply L Hospital's rule. So क्या है L Hospital rule? That will differentiate the numerator and denominator and then we'll apply the limit. Okay. So let's do it now. So what we get is limit x tending towards 0. ln x plus 1 का differentiation होगा 1 upon x plus 1. x plus 1 का differentiation होगा 1 minus ln x plus under root x square plus 1 का differentiation क्या होगा? 1 upon x plus under root x square plus 1. और फिर x plus under root x square plus 1 का क्या differentiation होगा? 1 plus 1 upon 2 root x square plus 1 into 2x. Okay. अब ये डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएट कर देते हैं. So on differentiating the denominator, सबसे पहले हम लोग u into v वाले फॉर्म में,
तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x इंटू ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। डिफरेंशिएशन में तो किसी को दिक्कत नहीं है? यदि है तो लेट मी नो। हाँ ओके, नहीं है दिक्कत। तो अब क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस। ओके, तो ये जो चीज है इसको सॉल्व करता है। तो 2 गॉट कैंसल्ड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी आपको वो दिख रहा है। तो ओवरऑल क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे क्या बचेगा हमारा? ये अगेन होगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। So we get ln x plus 1 upon under root x square plus 1 plus ln x plus under root x square plus 1 upon x plus 1। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया होगा सबको। अब क्या आ रहा है? अब रख के देखते हैं x टेंडिंग टूवर्ड 0, तो x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो क्या आएगा? 1 अपॉन 0 प्लस 1 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस 1, दिस इज अगेन 1। तो न्यूमरेटर तो 0 आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? ln 0 प्लस 1 ln 1, ओ इट इज 0, प्लस ln 0 प्लस 0 प्लस 1, so इट इज अगेन 0, तो 0 बाय 0 अगेन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और हम लोग एल हॉस्पिटल लगा के देखते हैं। ठीक है, so this becomes limit x tending towards 0, LCM ले रहा है यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, अब जो ये वाली चीज है और यहाँ पे जो ये वाली चीज है, दिस विल गेट कैंसल्ड, राइट? सो x प्लस 1 ln x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पे एल हॉस्पिटल नहीं लगाया है, वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट। न्यूमरेटर में -1 किधर है? ओ या, अब ठीक है। ग्रेट, तो फिर अब इस पे लगा देते हैं एल हॉस्पिटल जल्दी से। अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। So what do we get here? 1 upon 2 root x square plus 1. We are differentiating the numerator, okay? And then here we get -1. नीचे क्या आएगा? अगेन u इंटू वी वाले फॉर्म में है, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। दिस इज u इंटू वी, दिस इज u इंटू वी। तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले x प्लस 1 को वैसे ही रखते हैं, इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 1। x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। नाउ 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x
ln x plus under root x square plus 1 and plus 1 upon ये ln x plus under root x square plus 1 का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने ऊपर देखा था, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इधर पे क्या आ रहा है, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज गेटिंग कैंसल्ड, तो ये 1 और 1 है। अब हम रख के देखते हैं ये लिमिट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे यदि 0 रखी तो ये क्या बन गया 0, ये क्या बना ln 1 विच इज 0, इसमें भी हम लोग 0 रख रहे हैं तो ये आ रहा है 0। ओके, तो अब फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0, ऊपर है 0 माइनस 1 विच इज -1, नीचे यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 1 है, तो अब हमने लिमिट रख दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। So what is the final answer? -1/2. Any doubts, anyone? Or is it clear? Okay. So now let's move on to the next question. This looks interesting. So again, you have 2 minutes. Solve it and let me know the answer. This is not a difficult question. I want you all to try and give me the answer. Okay. Okay. Kritika got B. Is B correct? Yes, it is absolutely correct. Very good. So now I think we should move on to the solution part. Okay. So
सबसे पहले तो I'll put x equals to infinity and see what we get. Okay. So here infinity plus infinity upon infinity minus infinity. So uh, this is indeterminate form. Okay. So अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसमें एलसीएम ले लेती हूँ x+1, जैसे कि x+1 पूरा नीचे आ जाए, तो थोड़ा सा नॉन इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म दैट टू नोन। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। LCM लेंगे x+1, then what we'll get is x square plus x plus 1 minus ax square minus ax minus bx minus b upon x plus 1 equals to 4, it is given. ये तो सबको समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस x की x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी है लिमिट, तो x इक्वल टू इंफिनिटी रख के देखते हैं। So what do we get? We get infinity plus infinity minus infinity, so we are getting infinity by infinity. So it is clear कि अब यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स, क्या आएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x माइनस a माइनस b माइनस 0। ओके, एंड x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर x वाले टर्म्स दो दिख रहे हैं, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी गेट x 2 minus 2a plus 1 minus a minus b equals to 4। अब infinity रख के देखते हैं। So we get infinity, but what we need is 4। यहाँ पे हमको चाहिए 4, लेकिन आ रहा है infinity। तो यदि कुछ ऐसा किया जाए कि this becomes 0, तब पॉसिबल है शायद कि ये जो है वो 4 बन जाए। ओके, तो इसको बना देते हैं अपन 0। 2 minus 2a equal to 0, we get a equals to 1, ठीक है। तो अब ये चीज तो 0 हमने कर दिया। नाउ फॉर दिस टर्म टू बी इक्वल्स टू 4, ये वाला जो पार्ट है ये 4 के बराबर होना चाहिए। So 1 minus a minus b equals to 4। a ऑलरेडी 1 हमें पता है, तो वो पुट कर देते हैं, माइनस b equals to 4। यहाँ से हमारा b आ रहा है -4, इसीलिए द करेक्ट आंसर वाज b। Everybody got the solution or any doubts you have? You understood it? You understood the solution? Okay, so I think we should move on to the next question now. Okay. So this is the next question. We did functions in our previous sessions. Just try it and let me know the answer in 2 minutes.
Okay. Pranav is giving answer D and Kritika is vouching for A. Okay. So here the correct option is D, none of these. The answer is not in A, B, C. Okay. So let's discuss the solution. So first what we'll do is, यहाँ पर gx is given that it is minus under root 25 minus x squared. Okay, great. Then we are asked to find the limit x tending towards 1, gx minus g1 upon x minus 1. So if gx is given and we have to just put the value of x equals to 1 to obtain g1, तो सबसे पहले तो हम लोग g1 find करते हैं. Okay. G1 is minus under root 25 minus 1. So it is minus under root 24. तो अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं. Limit x tending towards 1 dx minus under root 24 upon x minus 1. तो अब gx को भी हम लोग लिख देते हैं minus under root 25 minus x square plus under root 24 upon x minus 1. अब हम लोग x equals to 1 रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है. So when we put x equals to 1, we get minus under root 25 minus 1, which is 24. So minus under root 24 plus root 24 is 0. And x equals to 1, so 1 minus 1 is also 0. So this is indeterminate form. तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? L hospital rule. ठीक है. So again, for applying L hospital's rule, हम लोग numerator और denominator को अलग-अलग differentiate करते हैं. ठीक है. Minus 1 upon 2 root 25 minus x square into minus 2x plus root 24 का differentiation होगा 0 और नीचे आएगा x का differentiation 1. So what do we get is 2x upon 2 root 25 minus x square. Now let's put x equals to 1. We get 1 upon under root 25 minus 1, which is 1 upon under root 24. So in Kritika's answer, only this under root was missing. Okay, answer is 1 upon root 24. So it is not given in A, B, C options. So the answer is D, none of these. Okay. So now let's move on to the next question. This one is interesting. One second. Okay. Yash, is there any doubt? Okay, okay. So now this is the question. It consists of this fractional part of x, modulus of x, and x tending towards minus 1. So this looks interesting. So try it and let me know the answer quickly.
Anybody got the answer? Yes, Kritika, it is A. The correct answer is A. Yes, Yash, it is A. Okay. So now let's move on to the solution part. First, for this limit to exist, condition क्या है? The condition is that left hand limit should be equals to right hand limit. So let's check the left hand limit. So for left hand limit x tending towards -1 minus. ठीक है, माइनस इज फॉर डिनोटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट. क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ, सो आई एम डूइंग एक्चुअली व्हाट इज -1 माइनस एच इज सम स्मॉल वैल्यू, उसको हम रख रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट वी गेट इज 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ -1 माइनस एच कितना होगा? मॉड ऑफ -1 माइनस एच होगा 1 प्लस एच माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा यहाँ पे? माइनस एक्स तो होगा यहाँ पे 1 प्लस एच एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होगा यहाँ पे एच. ठीक है, तो वो यहाँ रख देते हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 1. ग्रेट. Now let's find out the right hand limit. So limit x tending towards -1 plus. तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? मॉड -1 प्लस एच. तो इसका जो मॉड होगा वो होगा 1 माइनस एच and the fractional part of minus of this would be again 1 minus h. पर अब यदि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, then we'll get that 1 minus h minus of 1 minus h. So what you are getting is 1 upon 0, which is infinity. So clearly left hand limit is not equals to right hand limit. Left hand limit is not equals to right hand limit. This implies that the limit does not exist. Okay, so you got it. Now let's move on to the next question. Try it and give me the solution in 2 minutes.
Okay, Yash, your answer is correct. The correct answer is B. So I think now we should move on to the solution part. So on putting x equals to infinity, यहाँ पर आ रहा है infinity minus infinity sort of thing, right? But ये जो अंडर रूट वाली चीज है, इसे देखते से मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों रैशनलाइज करने का ख्याल आता है. So I think I should first try rationalizing it and then we'll see what we get as the answer. Okay. So rationalize करने के लिए क्या करेंगे हम? Limit x tending towards infinity. Okay, it is given under root of x plus under root x plus under root x minus under root x. तो रैशनलाइज करने के लिए बीच वाले साइन में को चेंज करके, मतलब कि माइनस को प्लस करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो वी गेट अंडर रूट x plus under root x plus under root x plus under root x. So many under roots are there. And डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो यही आएगा डिनोमिनेटर में. सो इट इज under root x plus again under root x plus again under root x and plus under root x. So in numerator you can see that it is in the form of a minus b into a plus b. So a minus b into a plus b क्या होता है? A minus b into a plus b होता है a square minus b square. Okay, so limit x tending towards infinity, a square minus b square. So this is under root whole under root. यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो सबसे बाहर वाला अंडर रूट है वो गायब हो जाएगा. So x plus under root x plus under root x minus b square. So under root x का whole square होता है x. ठीक है, numerator is sorted. Now for denominator वैसे ही लिख देंगे under root x plus under root x plus under root x plus under root x. Okay, अब ये जो x है और ये x है, ठीक है, कुछ सिंपल सा आ रहा है क्या? अंडर रूट x प्लस रूट x अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x. अब यदि यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी रख देंगे तो ये वाला जो फॉर्म आएगा वो आएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी. तो अब जिसका मन है एल हॉस्पिटल लगाने का वो लगा सकता है, आंसर आएगा. लेकिन मेरा मन यहाँ पे कुछ और करने का है एंड दैट इज क्योंकि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और मुझे पता है कि इंफिनिटी यदि डिनोमिनेटर में जाए किसी टर्म में तो वो टर्म जीरो हो जाता है. तो यदि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट एक्स से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा हमारा? So if I divide numerator and denominator, देखते हैं क्या आता है हमारा. So we get limit x tending towards infinity. न्यूमरेटर को मैं रूट एक्स से डिवाइड कर दूं. अब यदि रूट एक्स से डिवाइड करूंगी न्यूमरेटर तो रूट एक्स अंदर अंडर रूट के अंदर जाके तो एक्स बन जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, और डिनोमिनेटर को यदि रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो
यहाँ पे बन जाएगा x अपॉन यहाँ पे बनेगा x अपॉन x प्लस एक और अंडर रूट के अंदर चला जाएगा x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स था यहाँ पे और रूट एक्स से डिवाइड किया था। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी अंडर रूट ये x बाय x वी गेट 1 plus 1 upon root x, and in denominator we are getting under root 1 plus under root 1 by x plus root x by x square कितना होता है 1 by x raised to the power 3 by 2 plus 1। ठीक है, तो अब ये क्यों किया था मैंने कि किसी टर्म में यदि इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो टर्म क्या हो जाता है जीरो। सो हियर माय ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। यहाँ पे 1 अपॉन इंफिनिटी आ गया जीरो, वाओ दैट्स ग्रेट। देन 1 अपॉन इंफिनिटी दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। तो अब क्या आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस जीरो इज 1 upon under root 1 plus under root 0, that is again 1, and then here it was 1, so the answer is 1 by 2. I hope you got the solution. Are there any doubts? Okay, so let's move on to the next question. This is the last question of today. So quickly solve it and then we'll wind up the class. So should we discuss the solution now? Okay, we'll wait for 1 minute, Kanish, and then we'll discuss the solution. Anybody got the answer?
So now I think we should move on to the solution part. So what is the question? Limit x tending towards infinity e raised to the power 1 by x square minus 1 2 tan inverse x square minus 5. But before doing anything, can I replace 1 by x with t? So, Kanish got the answer minus 1 by 2. Yeah, that's correct. Great, great. So now we should discuss the solution. So before doing anything, what I can do is 1 by x square को मैं t से replace कर सकती हूँ. ठीक है? तो यदि मैं 1 by x को t से replace करूँ, then x tending towards infinity दिया है. So if x is tending towards infinity, then t की लिमिट क्या होगी? t will tend towards 0. Okay. तो अब देखते हैं ऐसा क्यों किया होगा. Limit t tending towards 0 e raised to the power t square minus 1 upon 2 tan inverse 1 by t square minus 5. ठीक है. अब ये जो tan inverse 1 by t square दिया है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? Cot inverse t square. Okay. Let's write it. Limit t tending towards 0 e raised to the power t square minus 1 upon 2 cot inverse t square minus 5. अब क्या कर सकते हैं? अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो यहाँ पे दिख रहा है, इसकी मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है. क्या है वो प्रॉपर्टी? I know that tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. ऐसा मुझे याद आ रहा है. I hope it is right. ठीक है. तो यदि ऐसा है तो cot inverse x को मैं क्या लिख सकती हूँ? Cot inverse x को मैं लिख सकती हूँ pi by 2 minus tan inverse x. Great. यहाँ पर हम वही लिख देते हैं. Limit t tending towards 0 e raised to the power t square minus 1 upon 2. और cot inverse t square को मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? I'll write it as pi by 2 minus tan inverse t square minus pi. ठीक है. अब क्या? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. Limit t tending towards 0 e raised to the power t square minus 1 upon pi minus 2 tan inverse t square minus pi. तो ये तो 0 हो गया. तो अब हमारा आ रहा है लिमिट t tending towards 0 e raised to the power t square minus 1 upon minus 2 tan inverse t square. अब ये t tending towards 0 है, तो आप लोग को ये देख के एक फॉर्मूला याद आना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? लिमिट x tending towards 0 e raised to the power x minus 1 upon x क्या होता है? 1. And likewise limit x tending towards 0 tan inverse x upon x भी क्या होता है? 1. तो यहाँ पर हमको क्या जरूरत है? x की. And x here is t square. और यहाँ पे again t square की जरूरत है. So what I'll do is I will divide the numerator and denominator by t square. So now what do we get is limit t tending towards 0
e raised to the power t square minus 1 by t square. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है -2 tan inverse t square by t square. Now this thing by formula is 1 and this thing is also 1. तो अब क्या आ रहा है हमारा 1 upon -2 into 1. So what is our final answer? -1 upon 2. Okay, so okay, so you used L hospital. No worries, if you got the answer, then it doesn't matter which approach you followed. Okay, I found this approach easier. If you got the answer by L hospital, then also it is good. Okay, so this is all for today's lecture. I hope you enjoyed the lecture and we'll meet in the next class. Okay, thank you. Okay, I'll keep that in mind in next class. Don't worry.